welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Panuja Joshi. For the last few days since Operation Sheesh Mahal started, we've been asking you, how much is too much? Apparently the answer to that is nothing is ever enough. Because when you want grand, it's not enough to be lavish. Bigger is better. 45 crores is not enough. It also should be 7.2 acres. Why do we say that? We've already shown you how 45 crores was spent on renovating Mr. Kejriwal's residence, the Chief Minister's residence in Delhi. Then he wanted to complement the expense with some expanse to stretch the existing compound of the Chief Minister's residence from 4.7 acres to 7.2 acres. To make this possible, an order was given in 2021 by the Delhi government to have 2 bungalows and 8 government flats adjacent to the CM's house vacated. According to the documents with Times Now, a notice was sent on the 12th of August 2021 to 8 flats on Rajpur Road to vacate within 45 days. 2 years later, we went back to those flats to see what is happening. Are they already a part of the Chief Minister's compound, or is there still a little work to be done? I'm currently standing near the residence of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, and as per our sources, his plan was not only to spend on expensive marble and curtains, but to have an expansive area surrounding his residence. Firstly, let me show you, I'm currently standing outside the officer's flat 4547 Rajpur Road, Delhi, which is situated right behind CM's camp office, and I will request my camera person to come just a little and show that some sort of construction and demolition work is currently going on here to make way for CM's area to be expanded. Now let me give you a little perspective of where we are currently at. I request my camera person to zoom in. So we're currently at the place which is right behind CM's camp office, Delhi government. As you can see, the houses of IAS officers, judges were directed to be vacated so that CM's residence, the area surrounding his residence and office area could be expanded. So do all netas live this life? Do all of them have an entire compound spread over 7 acres with 45 crore rupees worth of fittings inside? For comparison, we went to the house of Uttar Pradesh Minister Danish Azad. Let's take a look at what his curtains, his floors, his furniture and sofas are like. अच्छा, आपका भी सरकारी आवास है? निश्चित पे आप जहाँ खड़े हैं सरकारी आवास में रह रहे हैं। हम देख रहे हैं सादा टाइल्स आपने लगवा रखी हैं। आपने लग्जरी टाइल्स नहीं लगवाई, वियतनाम से नहीं मंगवाई आपने? ये तो सरकारी टाइल्स जो लगाई थी वही सरकारी टाइल्स है। ये सोफा अगर आप देखेंगे तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब हमने ये सोफा खरीदा था। निजी सोफा लेके आप सरकारी आवास में आए? ये अपना पैसा खर्च किया? ये निजी सोफा है, सरकारी पर्दे भी दिखा देते हैं जब पर्दों की बात चल रही है वियतनाम की। ये 150 रुपये से ऊपर का कितना कीमत है? अमीनाबाद में कोई भी जाएगा, लखनऊ का बहुत मार्केट अमीनाबाद मशहूर है, 150-160 रुपए का पर्दा मिलेगा। जरा घर भी दिखा दीजिए, देख लें आपका भी घर कहीं लग्जरी तो नहीं? ये भी आपने मतलब ये मजा नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन ये फ्रेम है बस पार्टीशन के लिए ताकि लोग ज्यादा बैठते हैं तो सबसे उधर, लेकिन मजा नहीं आ रहा। आपने थोड़ा इसे इंटीरियर इसका, हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी ये कहते हैं कि हम राजनीति जनता की सेवा के लिए करते हैं। अच्छा, ये भी देख लीजिए, कुर्सी लकड़ी की, बड़े पुराने बाबा आदम के स्टाइल के, ये जमाने की उस तरह की। ये सब देखिए, हमने क्या बताया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये हमें सिखाया कि हमको राजनीति, ये मंत्री पद जनता की सेवा के लिए मिला है, अपनी निजी लग्जरी को पूरा करने के लिए नहीं। ये भाई जरा ड्राइंग रूम दिखा दीजिए इनका, जो लोग बैठते हैं, जहां पर लोगों से मिलते हैं, वो ड्राइंग रूम देख लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ भी आप पर्दे देख सकते हैं, वही पर्दे हैं जो अमीनाबाद से आए हैं। एक ही थान से आपने सस्ते कटवा लिए। भाई हम तो राजनीति सेवा भाव से करते हैं। Well, turns out some stuff doesn't come from Vietnam, it comes from Aminabad, which brings us to that eternal question. Have all of these findings about Mr. Kejriwal's abode, the expensive fittings and the expansive dwellings, belied the image that he had himself created so far? All the things that he had said, that big houses, good cars, a decent life, is a wasteful vanity. Of all of these being a symbol of VIP culture, of a VIP culture that he himself vowed to wipe out. Today, as all of these details come out, is Mr. Kejriwal going to accept
far from an Aam Aadmi, he actually today comes to embody the very VIP culture that he had berated not so long ago. You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, joins us along with senior editor of Swaraj, Tushar Gupta, Dr. Akashdeep Muni, political analyst. My first question is to Dr. Irsan Trivedi. You've been watching us for the last 4 days, Dr. Trivedi. At least now you will concede that from Mr. Kejriwal, what he said himself, कथनी और करनी में बहुत फर्क है. Ma'am, first of all, I mean, like, it is so nice to see that all the efforts are just behind to find out that this is rupees 45 crore CR, this is the curtain, this is like, but unfortunately, well, I'm glad that you are happy and you're seeing nice things on TV, but कथनी और करनी में फर्क है. Whatever that's happened in Pulwama, उसके ऊपर का पर्दा गिराने के चक्कर में you are trying to pull out, or this media is trying to pull out the parda on Kejriwal's house. And all this, see, whatever these things, I mean, like, whatever the 45 crore expenditure is there, I mean, but this is for the entire complex, not only one particular house. Sir, if you are taking about, if no, you are it's talking not. about No, that is not true. That is not true, sir. That is not true at all. The 45 crore. So let's be very clear on a few facts. Demolition part. No. You have shown the part which is already demolished, but you have not shown that already. So let's be clear about a few things. Let's be clear about a few things. The expense that we told you about earlier is going to be spent on Mr. Kejriwal's house. Then there is a separate expense for his camp office. And then there are these additional extensions which are being done. Then there are these additional extensions that are being done. CM House Offices Complex. Okay, no. CM House Office Complex. No. Yes. That is for his house. Sir, the carpets, curtains and toilets are being put in his house. That being said, today we have moved beyond the expenses, and I simply want to ask you, hold on a second, I simply want to ask you on the issue of the expanse. Mr. Kejriwal said, मेरे को 3 कमरे का घर चाहिए, 3 कमरे का. Today, why does he need 7.2 acres? 7.2 acres. What's the need, sir? If you are dealing with Delhi as a state, and if you are dealing Delhi as a I should say that say Kendra Shashit Pradesh, that constitutional driven part, I would like to say that it is not for house. Again, I'm very much stick to my statement that it is definitely not for house, but it is for house office complex, which has been mentioned in the document as well. But I mean, whatever the fuss which is being made, I would like to ask you this thing, that if the PM office house complex is spending 2,800 crore, if the PM house itself is costing around 400 something crore, then 45 crore for CM house office complex is definitely. Sir, right now I'm talking about the expanse, how large it is. Let's not, first of all, there is a huge difference between CM and PM. If it is an office complex, then it has to be large. It is not an office complex, it's a residential complex. Okay, Sanju Verma, when you have a residential complex of a chief minister who needs to deal with so many people coming, then okay, maybe he said earlier, मुझे 3 कमरे चाहिए. When he started running the state, he realized 3 कमरे से ज़्यादा चाहिए. Why are you holding that against him? Padmaja, you can accuse me of plagiarism, but today I will plagiarize what you said, a couple of hours back in that video clip. Size matters. And I think Arvind Kejriwal has actually taken it to heart, literally speaking, not just metaphorically. And, the problem here is not that he wanted to expand his residential complex, his Sheesh Mahal, from 4.7 acres to 7.2 acres. बात ये है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने 4th January 2014, वो क्लिप जरूर सुनिएगा, टाइम्स नाउ हैज प्लेड इट umpteen number of times.
अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं 5 कमरों के मकान में नहीं रहना चाहता, मैं गाजियाबाद के ऑफिस से काम कर लूंगा, मेरे कार्यकर्ता और जनता चाहती है कि मैं छोटे घर में रहूं, मुझे 2 या 3 कमरों का घर काफी है। वही केजरीवाल जो 5 कमरों के घर में नहीं रहना चाहते थे 2014 में, टुडे ही डजंट माइंड अ शीश महल विथ 15 टॉयलेट्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आई विल जस्ट गिव यू वन स्मॉल स्टैटिस्टिक। आपने प्रधानमंत्री के जो सेंट्रल विस्टा है उस पर आज चर्चा नहीं है, वो अलग टॉपिक है। आज जिस जगह प्रधानमंत्री रहते हैं, हिज रेसिडेंस। आई एम कमिंग बैक टू यू डॉक्टर त्रिवेदी, गिव अ 30 seconds, गोइंग बैक टू यू। यस प्रधानमंत्री का करंट रेसिडेंस spans over an area of 1.56 lakh square feet, which is how much in acres? If you convert it, it is 3.61 acres. And I'm taking the name of Sonia Gandhi because she has been one of the opposition politicians for the longest time. She stays in a residential complex which is bigger than that of the Prime Minister, 1.64 lakh square feet. If you translate that into acres, it is 3.7 acres. तो कहां सोनिया गांधी 3.7 एकर्स के घर में रहती हैं? कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के सबसे प्रमुख और सबसे पॉपुलर नेता, वो 3.61 एकर्स के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं? अरविंद केजरीवाल को इतनी क्या जल्दी मची थी कि 4.5 एकड़ भी कम पड़ रहा है, 7.5 एकड़ के घर में वो अपना निवास बनाना चाहते हैं? इसका जवाब दीजिए। Okay, Dr. Irsan Trivedi, are you absolutely certain the Prime Minister's residence complex is only 3.6 acres, Sanju Verma? That doesn't seem right. I'm just talking of the residential complex. I'm not talking of the, entire nearby paraphernalia. Okay. Dr. Irsan Trivedi, Dr. Irsan Trivedi. The chat broke in his parents' room. The chat broke in the office. He was living in that 80-year-old residence. Sir, again you are back to that छत. एक सेकेंड, I just want to ask you, उस एक छत को ठीक करने के लिए आपने पिलर से लेके, टॉयलेट से लेके, कारपेट से लेके 7 एकड़ का एक वो बना दिया। अरे एक छत थी तो उसके लिए 7 एकड़ का घर बनाने की क्या जरूरत है? मैडम अगर फॉर 7 एकड़ उसमें और ज्यादा छत होगी, और ज्यादा गिर सकती है। अहमदाबाद ये सब जगह पे रूल होता है कि 30 साल से ऊपर पुरानी बिल्डिंग का प्रॉपर उसका। Dr. Trivedi, just answer me a simple thing. Simple thing. What is the need of 7.2 acres? For my viewers, I want to put this in perspective. All right, let's just put it in another perspective. Let's go beyond government. The Udaipur Lake Palace in Udaipur is spread over 5 acres. The Taj Mahal Hotel in Delhi is spread over 6 acres, Dr. Akashdeep Muni. But the Chief Minister's residential complex is spread over 7 acres. Like, this is literally a house fit for kings. The Udaipur Lake Palace is 5 acres. It is literally a palace, but it is smaller than Mr. Kejriwal's palace. Now, you have raised some certain important questions. First and foremost, I just want to ask you that as at that point in time in Delhi, the LG was responsible for the finances. Did you take the bite of Anil Bajal, who was the then LG? Did you question him? It is not done by the LG. So here is the thing. Dr. Akashdeep Muni, hold on a second. You come every time and you say a most fantastical thing which has no basis in fact. So let's put the facts out there. Hold on a second, sir. Hold on a second. Dr. Akashdeep Muni, hold on a second. Because you make claims which have no facts behind them, then you say, aap jaake uski bite le lo. Who passed this expense? Hold on a second, Dr. Akashdeep Muni, on your very specific allegation, let me show you a document. This is the office memorandum, which is dated from the 12th of August 2021. This says very clearly, on the above mentioned subject, I am directed to say that due to redevelopment program of Delhi General Pool Residential Accommodation, it has been approved in cabinet decision. It has been approved, sir, by the Delhi cabinet. This particular idea of having these flats vacated, this decision was taken by the Delhi cabinet. Should I speak? Go on. With your permission? Yes, go on.
हाँ, आपने अगर थोड़ा सा जीएनसीटी रूल्स पढ़ा होगा तो वहां पे फाइनेंस के लिए एलजी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो सिग्नेचर करे कि ना करे, ये सारे जनता देख सकती है और गूगल करके पता कर सकती है, पहला बात। और दूसरा बात मैं जो पूछना चाहता हूँ कि ना कि ओके आपने एलजी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा, फाइन, वेल एंड गुड। It is not done by the LG. I am telling you, I have spoken to people within Raj Bhavan. This file never went to the LG. It was cleared by the PWD minister. There is no doubt in my mind about it, sir. You can Google. I have spoken to the actual person you are talking of. एलजी फाइनेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनका बाइट तो ले लीजिए एज अ जर्नलिस्ट। अरे भाई, उनके टेबल पे फाइल ही नहीं गई। उनको क्वेश्चन तो पूछ लीजिए कि कहते हैं उनकी नजर। अरे उनके पास फाइल ही नहीं गई, उससे क्या पूछूं? अरे नजर में रहता है, आपकी नजर में रहता है, फाइल ही उनके पास नहीं गई, नजर में कहां से आ गया भाई? फाइनेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल एलजी है, आपको पता नहीं है? सर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि पीडब्ल्यूडी ने ओके किया, दिल्ली कैबिनेट ने पास किया। This decision of 7 acres was taken by the Delhi cabinet. ओके नहीं करते, वहां पे भी प्रधानमंत्री जी लायबल है रिस्पॉन्सिबल के लिए, जहां पे उनकी और दूसरा क्वेश्चन मैडम, कैग के रिपोर्ट जो भी फाइनेंसेस डील जाते हैं, कैग उसके ऊपर रिपोर्ट देता है, जो भी फाइनेंसेस। has there been any report of CAG about misdoing in this case, ma'am? There is no embezzling. What we have said this right at the outset, sir, that this particular issue is about wasteful expenditure, which is running contrary to Mr. Kejriwal's own past pronouncements. मैंने शुरू में क्या कहा? कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आपने कहा 3 कमरे का मकान चाहिए, आपको 3 एकड़ भी कम पड़ गया। So, let's talk about facts. तुषार गुप्ता, first answer about LG's culpability, और उनसे आप बाइट क्यों नहीं ले रहे हैं? Padmaja, we don't need to answer that. Aam Aadmi Party Saurabh Bhardwaj answered that on 10th April 2023 when there was a debate going on about who cleaned Yamuna. And Saurabh Bhardwaj told the media that LG has no power to allocate any money for any projects. It's the government of Delhi that does that. आज 18 दिन बाद ये कह रहे हैं कि अरे LG ने घर के लिए सैंक्शन किए. But Padmaja, I think all of us have a very narrow vision about the kind of CM complex Arvind Kejriwal was trying to build. Probably he had a Diwane Khas, which would be with the interior designs, and a Diwane Aam, which would be by merging the 8 flats in 2 bungalows, and that is how the CM complex would be put together. But Padmaja, let me break down the psychology behind it. Fences behind it. The only objective of Arvind Kejriwal for the last decade has been to project himself as an equal of the Prime Minister. Now, he's nowhere equal to the Prime Minister in terms of number of seats in the Lok Sabha. He has 0. He's nowhere near to the Prime Minister in terms of authority. He doesn't even control the Delhi police. But that has been the objective of Arvind Kejriwal, and that is the psychology behind this mindless expenditure to just present himself, project himself as an equal to Prime Minister Modi. And as far as it goes about the LG, sir, आपके पार्टी के सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट का पैसा सिर्फ दिल्ली सरकार एलोकेट कर सकती है, एलजी नहीं। 18 दिन पुरानी रिपोर्ट है, बताइए, मैं आपको भी भेज देता हूं। बताइए डॉक्टर आकाशदीप मुनि, had the mentality that I am as big as the Prime Minister, we are going to have similar. मैं अपना एक 7 लोक कल्याण मार्ग नहीं, मैं एक अपना लोक कल्याण मार्ग से भी बड़ा बना लूंगा। पहला the first point is that if he has any problem, he can go to the court. Of course, he will go. I'm waiting when he will go. Just shouting on TV doesn't makes much sense. A second point is that you showed you went to a house of UP minister. I hope that you also go to the house of Brij Bhushan ji, who is accused of molesting 6 spokespersons. We actually did. Who are requesting. We actually did. इसका मतलब कोई लेना एक ना देना दो, but since you mentioned, we did go to his house and we asked him why is he not resigning, but that is neither here nor there and it's not relevant to this. I'll love to take part in that debate. Great. Yeah, I'm waiting. Great. You should have been there at 9:30 p.m. Now what's your point? No, 9:30 से मैं वेट कर रहा हूँ कि ना कि वो स्पोक्सपर्सन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ना कि भाई हम लोग थोड़ा एफआईआर। डॉक्टर आकाशदीप मुनि, आंसर माय सिंपल क्वेश्चन। आप इधर उधर की बात करते हैं when you have no answer. I'm asking you a simple question as purely as a lay person. Answer me, what does one do on 7.5 acres? ऐसा क्या है कि आपके 75 करोड़ के घर में नहीं आप हो पाया कि अब आपको 7.5 एकड़ भी चाहिए? चलो, I'll just reply on this that
as per the comment on the floor of Parliament, and listen to me carefully, by Hardeep Puri, and I am saying this with conviction, that the allocation, the amount of money allocated for renovation, reconstruction, etc., there is no limit to it. Am I quoting Hardeep Puri, Union Housing Affairs Minister? Okay, there is no limit, Sanju Verma. जीरो लॉजिक, हमेशा बिना लॉजिक पर बात करने की आदत बन चुकी है आकाश मुनि की. नाउ प्लीज डोंट हेकल मी बिकॉज़ आई लिसन एंड आई हर्ड यू आउट वेरी क्लियरली. यू मेक जीरो सेंस. No, answer the specific question that there is no limit, and that is what the CM is taking advantage of, for want of a better word. Okay, now please, this man indulges in whataboutery. I will make certain statements to expose his bunch of vicious lies. Please hold your horses. I did not heckle you. Chup ho jao. Thank you. First and foremost, I clearly say this with a lot of responsibility, and you can fact check this, Padmaja, that as far as expenses beyond a certain point, of course they go to higher authorities, blah, blah, blah. But as far as this current expense goes, look at the Delhi Administration Act of 1968 and the GNCTD Act of 1991. It gives sweeping powers to Arvind Kejriwal with respect to the expenses he can incur on his residential complex. My point is कि मान लो आपको 45 crores का खर्चा करना था. चलिए मानते हैं कि आपकी छत गिर गई, पर छत गिरने से आपको 11 लाख का कमोड भी जरूरी था, 4 करोड़ के वॉल पैनल भी जरूरी थे, 97 लाख के पर्दे भी जरूरी थे. चलिए ये सब बातें मानते हैं. मेरा एक सवाल है. If you knew that you had to demolish buildings and build a new residential complex for 45 crores, why did you say that you are only altering the building, you are only making additions, you are only renovating? Okay. यहाँ पर renovation तो हुआ ही नहीं. आपने तो buildings गिरा दी, demolition करके ये महल खड़ा कर रहे हैं. आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? Point number 1. Point number 2. आपने क्या दिल्ली आर्ट कमीशन का अप्रूवल लिया था? मैं आपको याद दिला दूं, even for Central Vista project, the Modi government had taken approval from the DUAC in July 2020. Central Vista का काम चालू हुआ जनवरी 2021. जब इस देश के प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए DUAC की परमिशन ले सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जो सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं, उनको इतनी क्या हड़बड़ी मची थी कि बिना DUAC के परमिशन के काम चालू कर दिया. 8 करोड़ का एक्सपेंस आपने बिना किसी अप्रूवल के अपने घर पर खर्चा करना शुरू कर दिया. PWD का अप्रूवल कहां है? Since we are talking about comparison on the kind of alterations and the kind of lifestyle that different people have, Tushar Gupta says the comparison Dr. Irsan Trivedi that Mr. Kejriwal is doing is that with the Prime Minister. We showed you one of a UP minister. I want you to take a look at another person who stays in Delhi. He's a member of Parliament of Delhi. Let's see what his lifestyle is like. Because he also, I'm sure, gets a fair number of people visiting him. How does he cope with that inflow of people? Let's watch this. आपका घर दिखाने के लिए आए हैं जनता को. आप बिल्कुल दिखाएं. जनता के प्रतिनिधि हैं आप. ये पर्दों से शुरू करते हैं. पहले तो कितने करोड़ के पर्दे हैं आपके? मुझे लगता है ये मुश्किल से 600 से 700 के पर्दे. एक पर्दा होगा 600 से 700 रुपए का. वो भी शायद बहुत है. मुझे शायद ये तो मुश्किल से 150 का होगा. 150 का होगा. ये CPWD. और इन सोफों की कीमत बताइए. बड़े शानदार लग रहे हैं सोफे. हाँ, मगर ये सोफे CPWD के नहीं हैं. अच्छा. ये हमें अपने से लगाया हुआ. आपने खुद खरीदे? हमें खुद खरीदा. कितने के खरीदे थे? ये शायद 8000 का ही पूरा सेट है. 8000 का ये पूरा सेट है. लेकिन आइए, हम चाहेंगे कि आप अपने घर के अंदर ले जाइए और आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं इस तरीके से. ये देखिए, ये मुख्य हॉल है, डाइनिंग रूम है ये, और ये है सांसद मनोज तिवारी जी का आवास. 2 बार से आप सांसद हैं, तो कितने करोड़ रुपए खर्च किए? क्योंकि जब आप यहां पर शिफ्ट हुए होंगे तो यहां पर भी आपने रेनोवेशन का काम कराया होगा. यहां अंदर भी सोफे डले हुए हैं.
हमारे घर का सोफा मैंने खुद बनवाया हुआ है हाथ से। ये हाथ से बना हुआ सोफा है। और ये आपने अपने खुद से खरीदा है? जी, ये पूरा हमारा सोफा अभी 2 और कहीं होगा। ये हमारा सोफा टोटल 11,000 रुपए का है। अच्छा, 11,000 का सेट है। 11,000 का सेट है। सेट है। तो टोटल आपने जब CPWD की तरफ से जब आप यहाँ पर शिफ्ट हुए तो लगभग रेनोवेशन में कितने रुपए खर्च हुए होंगे? मुश्किल से मुझे लगता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 6 लाख। 5 से 6 लाख रुपए में आपका ये पूरा घर रेनोवेट हो गया? पूरा। ये जो टॉयलेट आपने बनवाया है इसमें कितने कितने रुपए खर्च हुए होंगे? इसमें टॉयलेट में मुश्किल से 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है। लेकिन कुछ दीवारें भी खराब हो गई हैं। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये है कि करोड़ों की दीवारें नहीं है। करोड़ों की दीवारें इतने जल्दी खराब नहीं होती। थोड़ा सीलन नहीं ये पानी की सीलन है। जी। तो ये सब अलमीरा है। हाँ, अलमीरा है। ये सब वही लकड़ी की अलमीरा जो 900-1,000 में मिलती है। 900-1,000 रुपए में दीवार सब हमको गिफ्ट में मिली हुई है। तो जो मिली है, जो लोगों ने दी है, वो सब हम सजा के रखे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अगर साहस से मनोज तिवारी अध्यक्ष रहा है, 100 फिल्मों का हीरो हूं जी, 5,000 से ज्यादा गाना सुपरस्टार की हैसियत से पूरे देश में लोग प्यार देते हैं। ये मेरा रहन सहन है। अगर आप अपने नवभारत कैमरे को अपने घर में घुसाइए, नवभारत के कैमरे को अंदर ले जाने दीजिए। अगर आप नहीं ले जाने देते हैं तो इसका मतलब कि आप अय्यास हैं, आप चोर हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं और दिल्ली आपको माफ नहीं करेगी। डॉक्टर इरशान त्रिवेदी, 5 कमरे के मकान में अब मेंबर पार्लियामेंट ऑफ दिल्ली स्टेज, 5 मकान, 5 कमरे हैं, 5 Recently, Supreme Court just quoted that hate speech is now becoming so much prevalent. But here I am seeing that opposition leader who is MP of, member of parliament, and he is just using chor, prashtachari kind of words, and Navbharat Times, this Times now is writing vulture, this kind of words. Oh my God, to a person, who is giving 1 crore rupees to Shahid. Sir, answer the question. Here is a member of parliament of Delhi staying in a 5-bedroom house. Why does somebody else need 5 acres, 7 acres? Going on national TV channel, first you answer these things. What? Those who anybody who can talk in a way, when they just talk in a way. Okay, I can. What exactly is the word that you've taken objection to? Chor. No, I'm just telling that I'm just starting my thing. Na? I'm just starting. You're taking objection to what word? Chor. और मनोज तिवारी जी का घर 80 साल पुराना है। मनोज तिवारी जी दिल्ली के CM ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। मनोज तिवारी। By the way, Dr. इरशान त्रिवेदी, I don't know if you remember, अरविंद केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन शुरू ही उस स्लोगन से किया था, सारे नेता चोर हैं, और आज आपको चोर शब्द हेट स्पीच लग रहा है। केजरीवाल जी का स्लोगन ही था सारे नेता चोर हैं। That being said, before you go any further and think this is hate speech, I again want you to hear Mr. Kejriwal, when he was going to be sworn in, talking about a word called aukat. And I don't say it in a derogatory fashion. He used the word and people are holding him to that standard. Listen into that again. अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा। आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा। तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। केजरीवाल जी आपसे पूछ रहे थे कुछ साल पहले, क्या जरूरत है 5 कमरों से ज्यादा की, डॉक्टर इरशान त्रिवेदी?
बताइए क्या जरूरत है? मैं अगेन यही बोल रहा हूँ कि आपको वही है कि basically what is the problem is this, you know, that I mean, The problem is that you hold a man to his standards. Speak anything. He told us that 5 कमरों से ज्यादा जो रखता है वो चोर है, अय्याश है. And whatever the Aam Aadmi Party specifically, I mean, like, who is trying to bring, I mean, like, whatever the actually what the people need. Right. And that is like, I mean, you are just, I mean, focusing on this parda and marbles and everything where the people I am who are focusing dying. because Mr. people who are- Kejriwal put I our mean, the focus on government this. was not able to Very spend quickly, I have the last 10 5 seconds. Tushar Gupta, 55 final point aircraft. to be made. Final point, Tushar Gupta. Arvind Kejriwal once upon a time took the Delhi metro to work and it caused a security nightmare. That was the promise he gave to the people of Delhi. Today he has a Diwane Khas and a Diwane Aam running out of the CM complex at the taxpayers' money during the worst pandemic to hit the world in the last 100 years. It's up to the Delhi voters, Padmaja, now to decide that the facade that has been running before them for last 10 years, when are they going to vote it out? That's all. All right, I'm just going to leave it that. And you're absolutely right, Dr. Trivedi and Dr. Akashdeep Muni. Yes, people will be the ultimate judge, but they will also judge about what is said in public and what is done in private. That was the limited point. Thanks very much, all gentlemen. Sanju Verma for joining me.